Hi everyone, welcome to Pratham Test Prep. I hope your preparations are going fine as CLAT is round the corner. So in this video, I will be talking about the 7 common mistakes that you should avoid while appearing for CLAT exam. Number 1, and that's something which you don't really like, which is maths. हमसे math नहीं हो पाएगा. So we need to understand math is a very important subject when it comes to your CLAT exam because your accuracy is pretty high. आप clearly समझ जाते हो कि या तो मेरा आंसर सही है या गलत है. That shows कि आप वहां पर एक edge पर चल रहे हो. There is automatically a greater chance to score more than those who are not really appearing for the math section. Second, let's talk about the second one. ये भी कर लूं, वो भी कर लूं. What does that mean? The ideology towards CLAT is that you should appear for this exam with a smart approach. You need not do the hard work in total. Hard work के साथ साथ smart work भी करना है. You should be able to just pick कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे avoid करना है, किस area में मैं weak हूँ, किस area में मैं बहुत ज़्यादा strong हूँ. Right? So what you need to do is that you need to make a balance in between your hard work and in between your smart work. The third point, that the third mistake that you guys generally commit, mocks दे देते हैं, mock से हम rank ले आएंगे अच्छा. But trust me students, mock देना सिर्फ sufficient नहीं है. Mock देना is not enough. Mocks के साथ साथ it is equally important to analyze it properly. The more you will analyze, the more you will get to know about your mistakes and the more accuracy you can actually get, like I spoke about your QA section. Number 4, I know your dream college when it comes to the list of NLUs, that is the top 5 colleges actually. So I will just name it the one as NLSIU Bangalore. So आप सबको लगता है Bangalore जाना तो बहुत मुश्किल है. Undoubtedly मुश्किल है, but वो सबके लिए मुश्किल है. It is just you have to work on your accuracy. You just have to go into the examination hall with a clean mind, with the energy and with the attitude of the victory. If you will keep your positive outlook towards this exam, I am telling you, Bangalore जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. Fifth is not paying attention to previous year question. But आपको ये समझना है कि जो previous year's question है वो छुपा हुआ खजाना है. क्यों है छुपा हुआ खजाना? उसका रीजन ये है, आप अगर क्लैट के एग्जाम्स का पैटर्न देखोगे, यू नो दैट इज समवेयर दे रिपीट क्वेश्चंस ऑन द टिपिकल लाइंस ऑफ व्हाट दे हैव आस्क्ड 10 years बिफोर और 5 years बिफोर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सो दैट यू कैन जस्ट मेक अ माइंड सेट इन योर एग्जाम कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं स्कोर कर सकता हूँ, कैसे मैं बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम में. Sixth mistake that you guys commit, that is no GK revision. What you guys need to understand, GA and I'm like talking about CA as well, it is not about the cramming. सिर्फ cramming नहीं है ये, आपको cramming के साथ साथ समझना होगा. Let me give you a quick example. हम जब FM सुनते हैं when we are traveling in car or when we are somewhere, so subconsciously we listen so many things and then all of a sudden it clicks to us कि ये मैंने कहीं सुना था, वो आप आंसर मार्क कर सकते हो. इन द सेम वे योर GA इज देयर, राइट? सो जितना आप उस चीज को रिपीट करते जाओगे, जितना आप उस चीज को लूप पर सुनते जाओगे, रिविजन करते जाओगे, फॉर दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू दी आपके मंथली कंपेंडियम्स फ्रॉम प्रथम, या फिर आप कंपेंडियम्स कर सकते हैं. इन सब चीजों से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीके का रिविजन होता जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप्स. सोना बहुत जरूरी है. Even your parents must be telling you to take 8 hours of sleep. Same we are telling you to do. That is because आप जितना proper sleep routine रखेंगे उतना आप fresh रहेंगे, alert रहेंगे अपनी studies के लिए. So same ideology you have to just keep it till your exams. Now just trust your preparation, believe in yourself and say that I can achieve my goals. Thank you so much students and wish you all the best for your upcoming CLAT exam.